Namaskar, hello, and a very warm welcome to this 5-day, 5-hour online training on social media and cyber security. My name is Tanvi Khurana, and you're watching us at this moment from eVidya channel number 6 to channel number 12. So this is the entire training based on social media and cyber security, and every day in this 5-hour training we come with a new topic. So far we have covered social networking and social engineering on day 1, and on day 2, that was yesterday, we covered social network threats in digital era. Today we are entering into day 3, and we are going to discuss the topic that is open source intelligence, OSINT. If you have any questions, any queries, please reach out to us. You can simply call us on our number, which is 8800440559. At this moment, you're watching us on ncertofficial. That is our YouTube channel. In the live chat box, write down your questions, your queries regarding this topic, regarding this entire theme, and we will love to take all your queries towards the end of the program. And we have a guest with us. Let me please introduce you to our guest for today, and he is Mr. Raminder Singh. Sir, a very warm welcome to you. Thank you, ma'am. Namaskar sabko. Namaskar. Aapko bhi, sir. Sir is the scientist E from National Institute of Electronics and Information Technology, that is NEELIT. Let me tell you a little bit about this entire training, and today being the first Wednesday of November, we are celebrating Cyber Jagrukta Divas, and in collaboration with CIET, that is Central Institute of Educational Technology, NCERT, and NEELIT, that is National Institute of Electronics and Information Technology, this entire training is being organized. So this is a great platform for all of you to understand about cyber security, what all can you grasp about cyber security, and how those threats that are around you on social media platforms, you can be aware and you can get away with them. And of course, we always have to take precautions regarding in this digital era. So this entire training is very, very important to all of you. There is a specific email ID that we have for this entire training, that is training.helpdesk@ciet.nic.in. All your questions, your queries, you can share on this email ID, not just during this particular 1 hour, but later as well. Towards the end of this training, that would be on the last day, 3rd of November, a quiz link will be given to you. And all you have to do is watch all the sessions that we have done in this training, and you can be a participant. You can score 70% and above marks in the quiz, then you will be given a participation certificate. This is a 5-day training started on 30th of October, and the last day would be 3rd of November. Let me just tell you a little bit more about this entire training, that there is no attendance link. You don't have to mark your attendance anywhere. All you have to do is raise your queries regarding the topic, and sir would be answering the questions towards the end of the program. And all you have to do is register yourself, participate in this training, and I'll be explaining the entire process in the end. So please watch this entire program, and it is going to be helpful and beneficial to all of you. Like I said, that we are celebrating today Cyber Jagrukta Divas like every month, and for this particular training, this will help you in listing the ways of managing social media accounts while ensuring security. And this entire training will also help you in comprehending the policies and perspectives of cybersecurity and social media usage as well. So please watch this training, and let's begin this discussion on our topic, which is open source intelligence. Let me please ask sir, what is it that we are going to understand in this particular program today, sir? First of all, a very warm welcome to all the viewers, and I would like to take this opportunity to thank CIIT, NCERT for giving NEELIT the opportunity to be a part of this training. So it indeed is a great day because जैसा मैम ने अभी बोला था कि आज हम साइबर जागरूकता दिवस भी मनाते हैं. हर महीने का जो शुरुआती दिन होता है, we dedicate that particular day to cyber security awareness. So it's दोहरी खुशी है मेरे लिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना. And with regards to the previous 2 sessions that we have had that were conducted by
my colleague Shri Akash Sharan, who's scientist B in the same organization. You had a brief stint with regards to social networking and social engineering. Apart from that, you also had the brief stint with regards to what all the digital threats are in the social, what all the social threats are with regards to the digital era when you talk about. So this specific topic that we are dealing with today is a topic that should be known to everyone, बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं विद रिगार्ड्स टू डिजिटल एरा जहां पे हमें इंटेलिजेंटली बिहेव करना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा with regards to what all is happening around us so as to prevent ourselves from getting conned. Now, when I say conned, it means जितने भी साइबर थ्रेट्स, साइबर फ्रॉड्स, स्पेसिफिकली जो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचते हैं या जिनका हम शिकार बनते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है दैट विल बी हेल्पफुल टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, एंड आई होप आई कैन एनलाइटन देम ऑन दिस इशू सो दैट दे कुड use this in their rozmarra ki zindagi and get benefit from it. Okay. Okay, so sir, I can see that you have prepared a presentation. Would you like to share that and explain more regarding this topic to all our viewers? Yes, exactly, ma'am. I have had prepared a presentation and I'd like to show this to the audience so that they could have the necessary conceptual knowledge in relation to the topic that we are talking about today. Okay, sir. Could you please start explaining? Right, ma'am. Thank you so much. Thank you. So again, a very warm welcome to all the viewers. Official welcome तो हो चुका जी, और दोबारा से एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट पे. मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है इस इवेंट को होस्ट करना. और as far as the corresponding 5-day training is concerned, you already have 2 sessions in relation to this particular training. With regards to the social media, social networking, social engineering, where you did have a look into the threats that are looming with regards to the social media, social networking and social engineering. Now, this particular topic is something which normal user is not aware of from their day-to-day life perspective. When we talk of information technology. So मैंने टॉपिक की शुरुआत में जो पहली प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं उसमें मैंने लिखा पर्दा उठाना ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से. I deliberately choose these words and I deliberately did choose the word demystified because majority of the people who are thriving in this digital era are not aware about this particular concept, which would eventually lead them to be more alert when they are using the social media, social networking and social engineering in their day-to-day lives. So without wasting any time, I'd like to begin with the presentation. The roadmap for our presentation would be like कि हम लोग आज शुरू करेंगे. We would look at the introduction with regards to what actually OSINT is. We would see various sources of OSINT. OSINT के साथ बहुत सारी और terms associated हैं, with the help of which you will be able to better understand what OSINT is all about. So we'll have a peep into those corresponding terms also. इसलिए बाकी ints जो OSINT के साथ associated है, we'll have a look for those terms as well. We'll see the major pillars along with the other terms that are associated with the OSINT. Plus, we'll have a look at the evolution and some important movements that took place with regards to this concept. Let me tell the viewers that the concept is very old. Since World War I, the corresponding concept is originated. But as I told you in the beginning of the presentation, majority of the people do not have the idea with regards to this. So probably आज की presentation एक पर्दा उठाने का काम करेगी इस concept के corresponding. We would further go in for the importance of OSINT and we would look into the methods of how we can gather OSINT, how we can better understand, how we can better experience OSINT with regards to our day-to-day live working. Plus हम संक्षिप्त मात्रा में देखेंगे कुछ case studies, few of the real life events that are encircling around this particular concept, like the Russia-Ukraine war, then the Balakot strikes that our Indian Air Force did on the Pakistani territory, and plus some other things that are associated with the OSINT. So there you will get the feel कि क्यों ज़रूरी है OSINT के बारे में जानना, why it is required that we should know about OSINT.
then we would obviously see the limitations of this particular concept, because जैसा किसी ने सही में बोला है, विज्ञान जो है वो दोधारी तलवार है. अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो एज अ पर्सन हु इज getting awareness about this open source intelligence, one must also have the idea with regards to any disadvantages or any lacunas that are associated with this particular concept. So we'll have a look into those as well. Then we'll talk about ethics. Open source intelligence, नाम सुन के कुछ कुछ आइडिया आपको हो रहा होगा कि ओपन सोर्स मीन्स के इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर. Now, what you have to do with regards to getting that information is that you have to get hold of that information and you have to use it ethically. It's not like there is a quote that I would be sharing with you in the due course of the presentation. That's a very beautiful quote that I got from a research paper that was written. And that quote really tells the summary of what OSINT should be. It tells you about the way a person should be using OSINT in their daily lives. So we'll have some career opportunities that you can build with OSINT, and at the end we'll have the summary. And आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे. हम निलेट में एक प्रथा हमेशा लेके चलते हैं कि नाइलेट साइबर जागरूकता दिवस के कॉरस्पॉन्डिंग, और पिछला मंथ एक अक्टूबर मंथ जो है वो साइबर जागरूकता मंथ के तौर पे मनाया जाता है. तो नाइलेट में हम एक प्रथा, नाइलेट रोपड़ में हम एक स्पेशल प्रथा करते हैं कि रोज हम एक साइबर सिक्योरिटी स्लोगन एम्प्लॉइज को देते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ा सके. सो आई विल एंड द सेशन टुडे विद अ साइबर सिक्योरिटी स्लोगन एज वेल. सो हम आज की प्रस्तुति जो खत्म करेंगे एक साइबर सिक्योरिटी स्लोगन के साथ खत्म करेंगे. सो आई होप टू टेक यू अलोंग with me in the presentation. So talking about concept of OSINT, if we look at the definition, it refers to the collection and analysis of information from publicly available sources. Now please note here that the main striking aspect that you have to understand with regards to OSINT कि information publicly available है. तो जो भी आप information collect कर रहे हैं, कलेक्शन के बाद जो भी आप उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से मिल रही है. Now, what all is encompassed in this particular information? What it includes? It includes information from social media. It includes information from news articles. Whatever information you're able to gather from the websites, because many number of times, so many number of websites you're visiting on day-to-day basis. Then there are public records which you can access, and there are many other online sources, like there are many number of blogs, there are many number of websites that are providing you with the conceptual information that you can use in your day-to-day lives. So where this OS intelligence is actually used now, in this particular aspect, this OS intelligence is used by various entities for intelligence gathering, investigations into cyber crimes and cyber frauds. This is very much prevalent, and it is being used in cyber security a lot, both by the conventional people and the wrongdoing people as well, जिनको आप hackers बोलते हो. So hackers भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और आज के बाद I would expect that after hearing this session, जो आम लोग हैं जो इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, they will also start practicing OSINT and make themselves more alert with regard to their day-to-day aspect of using the information technology. And it is used for competitive analysis also. Like if I give you an example, दो राइवल फर्म्स एक दूसरे के इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके एक दूसरे का जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो करती हैं ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है. व्हाट आर द good things, or what are the initiatives that are being taken by that company, what is the share value of that company. So many number of aspects related to technical aspects, related to their financial aspects are there, जिनकी information लेकर के आप इसको use कर सकते हो competitive analysis के लिए. Now, if I briefly give you an example, though I have quoted this in the case study as well, अगर आप OSINT का एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाम की एक चीज है जो हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो चुकी है. एंड दिस इज इन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डेटा एनालिटिक्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टूल्स and web applications to offer a 360-degree solution for intelligence and law enforcement agencies with regards to fighting the day-to-day crimes. So ये evolution है OSINT का, ये impact है OSINT का on our country, कि एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाम की एक संस्था है जो
बहुत अच्छे से इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने आप को सक्षम बना रही है टू फाइट द क्राइम ऑल अराउंड. द क्राइम कुड बी साइबर क्राइम, द क्राइम कुड बी नॉर्मल पुलिस क्राइम्स जो होते हैं, एवरीथिंग. आज की डेट में आपने देखा होगा कि सो मेनी नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड टू फिगर आउट. अभी जो पीछे वायलेंस हुई थी, किसी भी जगह पे अगर वायलेंस होती है तो दे आर एबल टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिकली अवेलेबल कैमराज, and the police is using that information to catch hold of the people who are creating ruckus or the people who are not following the norms. So this is the impact of open source intelligence that you have. Then moving on ahead, जैसा मैंने बोला था प्रेजेंटेशन के शुरू में, बहुत सारे और ओएस इंट्स हैं जो इस ओएस इंट के साथ जुड़ते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. That is collection of information by human to human intelligence interaction. Day to day lives में the gossip that you have with regards to your friends, with regards to your colleagues, with regards to your neighbors, that is also a source of information for you. I hope you agree to this. Then you have थोड़ा सा और इसको technically अगर हम और ज़्यादा evolve होने दें तो signals intelligence, which employs interception of communication or messages done electronically. So it is communications intelligence and interception of electrical signals, for example monitoring of radars, termed as electronic intelligence. Now this is specifically usage by, you can say, spy agencies जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो आपका ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया जाता है ये फिगर आउट करने के लिए कि दुश्मन की गतिविधियां क्या हैं, दुश्मन क्या प्लान कर रहा है. तो दिस इज व्हाट इज एट्रीब्यूटेड टू सिग्नल इंटेलिजेंस, communication intelligence and electronic intelligence. Another good example which is associated with other OSINTs is geospatial intelligence, where you are using visual representation of activities, analysis of image to extract information intelligence called imagery intelligence. So that is with the help of satellites, when you're able to take the image of a particular area to scan for various geographical factors, not only with relation to the military aspect, but in relation to के वहाँ की soil कैसी है, वहाँ का climate कैसा है. So again, this is one of the factors, one of the type of intelligence that you are using. Then lastly is measurements and signal intelligence, scientific technical information that is obtained by analysis of data. So ऊपर वाले 3 पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो you are collecting the information. नीचे वाले में आप देखेंगे तो it's measurement. जो इंफॉर्मेशन आप ऊपर वाले 3 पार्ट्स में कलेक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करके, डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करके, इसीलिए व्हाट यू कैन सी इज दैट आई हैव रिटन लॉट मेनी नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स, मेट्रिक्स है, एंगल्स है, स्पेशल वेवलेंथ, टाइम डिपेंडेंस, मॉड्यूलेशन, प्लाज्मा, हाइड्रोमैग्नेटिक्स, ऑल physics and chemistry related issues that we have put in here, which is derived from technical sensors. So you're getting information from sensors. आप सेंसर से इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो और उस गैदर्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करके उसको रिफाइन कर रहे हो ताकि जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है उसको आप बेटर अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट कर सको. So these are the ints that are associated with then ये एक अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे शायद आपको एग्जैक्ट फील आएगा उस पर्टिकुलर चीज का जिसकी हम बात कर रहे हैं. So you see that the green part where it is open source intelligence is linked with all these. So at the top you have all source analysis. तो all source analysis में human interaction है, signal communication interaction है, electronic interaction है, then imagery interaction है, and lastly you have measurement interaction also. All clubbed together gives you what you call as the open source intelligence. So open source information क्या है? एक बहुत बड़ी खदान है, basically खदान और repository of information which is lying around you. Scores and scores of information, innumerable amount of information is lying around you. Only thing is that what is important from your point of view, you need to gather that, and when you gather that, you need to analyze that so that you are in a better position to implement the same with regards to your day-to-day works. So अगर इसका evolution देखें, if you look at the सृजन, अगर इसका सृजन देखें और इसका OSINT का कुछ evolutionary part के corresponding जो major events हैं OSINT से associated, if you look at the OSINT, I have not gone into the बहुत ज़्यादा history मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश नहीं करी है. I have been very brief. Pre-World War I में there was a blurred difference between open and secret sources. So that was not a much use. That information at that time was not of much use, though the information was being
used by the rival countries to fight the war. But starting from World War II till the Cold War, intelligence experts realized the importance of newspaper, radio, and personal witness accounts. So, this was the time when it was realized that the information which is available around you is of importance. जो आपके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन पड़ी है वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप बहुत कुछ उससे निकाल सकते हो. सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर टू दिस पार्ट, रिवाइवल ऑफ ओएसएंट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट के आने के बाद और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ज्यादा प्रेवलेंट हो गई चीज, ये और ज्यादा इसके मायने जो हैं ये बढ़ गए, बिकॉज आज की डेट में इट इज रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू हैव the information with regards to the other countries with whom you are not only fighting a war, but with regards to the progress of other countries that is taking place. So if we look at the major events of OSINT, like if you look at the historical perspective, the major events of OSINT were like intelligence activities of US were carried out by Office of Strategic Services. Office of Strategic Services को OS बोला जाता था 1944 में, जिसको एस्टैब्लिश किया था ये जो शख्स हैं विलियम डोनोवान, इन्होंने. बट कोल्ड वॉर के बाद जो ओपन टू ऑल कॉन्सेप्ट आया, दैट एवरीबडी इज हैविंग सम इंफॉर्मेशन, एंड बिकॉज इंफॉर्मेशन किसी की जागीर नहीं है, इंफॉर्मेशन इज ओपन टू ऑल. सो अ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय the father of OSINT, who's known as Robert David Steele, in which more than 600 participants from various governments and countries participate. 600 participants from various government and private sector companies participated, and there were more than 40 countries who participated in this conference. So over a period of time, this has evolved and it has reached the pinnacle where now it holds a lot of importance. So हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से आती है. Basically, whenever you talk of OSINT, from where it comes. So ये आती है जी पब्लिकली. एक सोर्स, जो एक स्रोत है इसका, वो है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. लाइक यू कैन सी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लैंड डीड्स, प्रॉपर्टी डीड के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस में आप कहीं फॉर्म भरते हो, कहीं आप अप्लाई करते हो, वो सारी चीज. देन यू हैव ओपन डेटा सेट्स रिलीज बाय गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्चर्स दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस एंड एनालाइज. जो गैजेट ऑफ इंडिया में चीज़ें आती हैं बहुत सारी, उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. देन यू हैव ऑनलाइन कम्युनिटीज, लाइक यू हैव वेरियस फोरम्स. मैंने प्रेजेंटेशन के शुरू में बोला था, यू हैव ब्लॉग्स जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. यू हैव डिस्कशन बोर्ड्स, यू हैव सोशल मीडिया ग्रुप्स वेयर द इंडिविजुअल्स शेयर excuse me, where individuals share information and opinions. Then above all this, you have websites, information available on public websites like news sites specifically, which are constantly updating. आज की डेट में वो Israel and Palestinian war or Russia Ukraine war or whatever latest that you want to find out with regards to Asian Games and World Cup, that is available. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जी, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे और ब्लॉग्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. तो एक सोर्स तो ये है, one source is this, which is from where you can gather the open source intelligence. The second source is more towards the media part. That is, they are all media sources. Like you have news outlets. If I elaborate the corresponding news outlets, you have newspapers, you have TV news channels, you have online news platforms that provide up-to-date information on various topics. Then you have radio broadcasts. अभी का जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है, that you can see live, this is what OSINT is all about. मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, you're gathering the information, you're learning something new. So this broadcast that is taking place, जो टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, this is again what is open source intelligence is all about. Then you have podcasts. Over a period of time, मैक बुक्स आ गई, आईपॉड्स आ गए. मैकिंटॉश कंपनी ने एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया कि हमारा प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे, आई मैक बुक यूज कर रहे हो, आईपॉड यूज कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने पॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट निकाला कि जिनके पास आईपॉड है वो लोग ऑडियो प्रोग्राम्स के थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स सुन सकते हैं, इंटरव्यूज सुन सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशंस में और एनालिसिस में with the help of iPods. Then blogs and opinion pieces तो हैं ही हैं, where you can always voice your concern. There are online articles and blog posts that offer insights and perspectives on different subjects. There is one journalist by the name, I'm not able to recall the name, लेकिन उनका एक YouTube channel है, The Print.
ये मैं जो एक केस स्टडी है उसमें आई हैव टेकन द स्नैपशॉट ऑफ दैट. ही गिव्स अ वेरी गुड एनालिसिस विद रिगार्ड्स टू व्हाट द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. लाइक अभी जो मणिपुर में रॉयट्स हुए थे वहां उसकी इंफॉर्मेशन, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन, वो क्रक्स बताते हैं. तो वहां से आप और ज्यादा क्लैरिटी ले सकते हो विद रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता, और आप अपने आप को अवगत करा सकते हो इन चीजों से जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता. और सोशल मीडिया के कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको ये इंफॉर्मेशन को सजग तरीके से एक्सेप्ट करना है. आपको इंफॉर्मेशन तो गैदर करना है लेकिन साथ ही साथ अलर्ट भी रहना है. इसीलिए हमने ये टॉपिक सोशल मीडिया में डाला, इसीलिए हमने सोशल नेटवर्किंग सोशल इंजीनियरिंग में इस टॉपिक को डाला कि सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग सोशल नेटवर्किंग को यूज करते समय आपको ओएस इंट का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है. So importance of OSINT, it provides access to a vast amount of publicly available information. As I told you, repository huge है जी. वो कहते हैं ना भव सागर है बेसिकली एक बहुत बड़ा, जिसमें आपको बस गोते लगाने हैं एंड आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है. तो it helps in understanding and analyzing current events and trends. That's very true because you're able to figure out analysis, you're able to figure out where one particular company stands in relation to its products that is being delivered to the market. Acha, it is crucial for conducting thorough research and making informed decisions. Now, this is something which is the need of the hour because to fight crime, to prevent yourselves from getting conned, साइबर फ्रॉड्स आपके साथ ना हो, आप अलर्ट रहें, ये थॉरो रिसर्च आप ओएस इंटेलिजेंस को गैदर करके जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे उस पर जब आप रिसर्च करोगे तभी आप ये डिसीजन ले पाओगे कि भैया सोशल मीडिया पे मुझे इस लिंक को क्लिक नहीं करना क्योंकि लिंक्स जो है वो फ्रॉडुलेंट हो सकते हैं. सोशल मीडिया पे मुझे किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं करना क्योंकि वो कमेंट करने के मैं भी उस पोस्ट का भागीदार बन जाऊंगा. Not only that, social media, see, it is like a good example which I would like to give to all of you is like, it is not the ICT part or the internet part. आप सोशल मीडिया के कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं भी जाते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने गए, वहां पे जाके आपने अपना आधार कार्ड दिया. यू सबमिट योर आधार कार्ड लाइक दिस ओनली. नो, व्हेन यू आर सबमिटिंग योर आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड पे यू नीड टू पुट योर you need to attest that Aadhaar card and you need to write down for what purpose you are giving this Aadhaar card, because whenever you are supplying the information, that information has to be credible. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आप उस पर अपना मार्क लगा रहे हो, अगर आप उस पर अपना पर्पस लिख रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन के मिसयूज होने के चांसेस कम है. तो ये महत्व, ये चीजें आपको ओएस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके समझनी होगी. यानी आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के कॉरेस्पॉन्डिंग, सोशल इंजीनियरिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग, सोशल नेटवर्किंग के कॉरेस्पॉन्डिंग, और फिर आपको इसको एनालाइज करके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना होगा. एक्सक्यूज मी. सो बाय हुम ओएस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज यूज्ड, कौन इस्तेमाल करता है इसे? गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, मिलिट्री एजेंसीज करती हैं, जर्नलिस्ट्स जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्टर्स जो होते हैं, दे आर ऑल यूजिंग दीज. देन ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर्स, यूएन वाले, यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, यूनिसेफ है जो इसको यूज कर सकती है. देन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं वो यूज करते हैं. देयर आर लॉ फर्म्स that are using this particular open source intelligence. Then information security और cyber threat intelligence के लिए तो ये बहुत ज्यादा prevalent है, because आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन गैदर करके जो malicious चीजें, जो बुरी चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही है उनको आप रोकने में सक्षम बनते हो. Then penetration testers. I have used the abridged version of this particular part. Pen testers. Pen testers are actually a specific you can say a specific branch of cyber security जहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके बहुत सारी और चीजें करते हैं, लाइक प्रिवेंटिंग अ कंपनी फ्रॉम गेटिंग हैक्ड. देन देयर आर ऑफ कोर्स सोशल इंजीनियर्स that are performing the same thing and alerting people how to use the internet and information communication technology with regards to social media, social networking and social engineering in a more सजग तरीके से. So कैसे यूज होता है ओएसएंट? सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इट कैन बी यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज टेररिस्ट एक्टिविटीज और साइबर अटैक्स. ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर
intelligence gathering on foreign governments, organizations or individuals, like foreign bank accounts, फॉरेन गवर्नमेंट्स के बारे में, किस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, कौन सी गवर्नमेंट आजकल स्टील में क्या कर रही है, माइनिंग में क्या कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर वैल्यू क्या है, so many number of things you can gather. Then business and market research used to gather information on competitors, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, भी आने वाले टाइम में कार की सेल्स बढ़ेंगी या कम होंगी, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. कैन बी यूज टू इन्फॉर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली दीज इंफॉर्मेशन इफ यू गेट, it eventually helps you to plan in a more better way. It eventually helps you to evolve in a more better way, because आप देखते हो मार्केट क्या कह रही है, मार्केट की डिमांड क्या है. आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हो उससे आपको मार्केट की डिमांड पता लगती है. उस मार्केट की डिमांड को आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हो कि कंपनी के प्रोडक्ट में ये चेंजेस मैं करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट और बिकेगा. सो हाउ यू आर रीचिंग दिस कंक्लूजन? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद द फर्स्ट स्टेप दैट you have to do is gather that information. Then social media monitoring, monitoring social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn to collect relevant information and insights. This is being done by your security intelligence agencies. कभी आज की डेट में कोई साइबर क्राइम कमिट होता है तो पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट करती है कि there is some relation between a boy and a girl committed suicide. The corresponding police goes and checks the Facebook page of that particular person के क्या वार्तालाप हो रहा था उस लड़के और लड़की में जो ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण ये चीज हो गई. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की डेट में होती है. प्लस इंटरनेट को लेके यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. देयर वाज अ प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ टेड टॉक्स दैट वाज होस्टेड बाय शाहरुख खान. आई स्टिल रिमेंबर इन दैट प्रोग्राम द McAfee head of the Asia Pacific region came. Not able to recall the name of the person, but उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली और वो बात ये थी कि never ever consider that you are watching the internet. So there is somebody sitting on the internet and watching you back. So ये जो monitoring social media platforms है, this is again one aspect of OSINT that is being used. कोई ना कोई बैठ के आपका Facebook प्रोफाइल देख रहा है, कोई ना कोई बैठ के आपका ट्विटर प्रोफाइल देख रहा है. Then public record research, OSINT can be used by journalists to gather information on range of topics, politics, business and crime also, and this helps them to uncover the stories and provide evidence for reporting. Then investigative journalism में भी ये चीज यूज होती है, because public records, government databases, court filings, business registries and property records को uncover करके आप valuable intelligence हासिल कर सकते हो. और कहीं ना कहीं ये intelligence आपको help करती है जो इनजस्टिस हो रहा है या जो प्रॉपर चीज नहीं हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए. Then legal proceedings are there. OSINT can be used in legal proceedings as well to gather evidence or conduct due diligence on potential witness and defendants. कोर्ट बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है जी आज की डेट में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का टू फाइट द क्रिमिनल केसेस. देन OSINT का अगर इंटेलिजेंस हम लोग लाइफ साइकिल देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रिपरेशन, where needs, requirements, requests are assessed, such as determining objective of tasking, identifying best sources to use to find information one is looking for. So what are the exact needs, what are the exact requirements, what are the requests that are first assessed. Then based on the needs, requirement and request आप determine करते हो कि मैं कौन से tasks perform करूँगा, कहाँ से इस इंफॉर्मेशन को ढूंढूंगा ताकि जो मेरा पार्ट है वो इंफॉर्मेशन मुझे गैदर करने, मेरी इंफॉर्मेशन जो है गैदर हो जाए. देन उसके बाद वंस यू आर थ्रू विद द प्रिपरेशन पार्ट, यू स्टार्ट कलेक्टिंग फ्रॉम ऑल रेलेवेंट सोर्सेज दैट आर पॉसिबल, फ्रॉम ऑल रेलेवेंट सोर्सेज दैट यू have highlighted in the that you have highlighted in the preparation phase. Then you move on to the processing part. The collected information is organized, because देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, हाफ हैजर्ड मैनर में आ रही है, तो आपको उसको ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना. आपको उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हैव टू पुट मार्कर्स और पुट सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स जहां पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सको कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. देन एनालिसिस एंड प्रोडक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वाज कलेक्टेड. That is identifying the patterns. After the information is processed, you have a thorough look at the information. You identify the patterns of that particular information which you have obtained. Yeah, you basically develop a timeline of a travel history. कहाँ पे कब क्या क्या हुआ था. This is what you need to understand. और ज़्यादा clear हो जाएगा आपका concept. कहाँ पे कब क्या क्या हुआ था. This is how you need to go in for the analysis. Then dissemination.
The last aspect is presentation delivery of open source findings. What all you have gathered, what all you have processed, what all you have analyzed, that is being shared in the form of reports, timelines, recommendations, या जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप इस तरह से इस इंफॉर्मेशन के प्रोसेस को फॉलो करके ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लाइफ साइकिल इंटेलिजेंस साइकिल को फॉलो करके आप निकाल सकते हो. दो तरह के ओएसएंट हो सकते हैं जी. यू कैन हैव पैसिव, जहां पे आप टारगेट के साथ एंगेज नहीं करते, आप पब्लिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, लाइक किसी से सुनी सुनाई बात या किसी से ओवरहियर किया या न्यूज़पेपर में पढ़ा. दूसरा है आप टारगेट के साथ एंगेज करते हो, लाइक दिस कुड बी लाइक somebody is trying to look for your look to your social account. आपका फेसबुक अकाउंट सर्च किया जा रहा है जिसके लिए कोई स्पेशल परमिशन चाहिए होगी, या इसमें एट्रीब्यूशन का रिस्क है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कंप्लेन that somebody is doing what you call as cyber stalking, that somebody is looking for my Facebook page without my permission. मेरी जानकारी के बिना वो मेरी इंफॉर्मेशन ले रहा है. This is something which is going to be more stringent आने वाले टाइम में, because unless and until you would permit a person to gather information about you, the person do not have the right to gather the information. So over a period of time, I think DPDPA Act, we'll be discussing that act tomorrow in tomorrow's session. So वहाँ पे कुछ आइडिया आप लोगों को मिलेगा इसके रिगार्डिंग कि एक्टिव ओएसएंट इज डेंजरस बिकॉज आप बिना किसी की परमिशन से उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो. Passive is not that dangerous because you're gathering the information not direct by coming in direct contact with the target. You're getting the information from other sources that are related to the target, but you are getting the information. So that's the point. That basically is a offering you a leverage with regards to you getting caught in relation to gathering of the information, which is punishable by law. Then advantages is beneficial because it offers several advantages over other forms of intelligence. Access to publicly available information मिल जाता है जी आपको, जहाँ पे आप legally accessible information को भी access कर सकते हो. And organizations do not have to rely on classified or restricted sources of information, which can be costly and time consuming to get, because majority of the information is available on the internet unless and until it is duly marked that this information is copyrighted and should not be reproduced. Then wide range of sources are there, gathered from a wide range of sources including social media. We have seen in the previous slides also news articles, government reports and academic papers say. Then timelines are available because OSINT relies on publicly available information. It can be gathered quickly in real time. So this is one good aspect, good advantage of OSINT, because time नहीं लगता, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है. करंट इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके क्या चल रहा है, प्रोडक्ट को लेके मार्केट में क्या चल रहा है, वो आपको विद इन नो टाइम यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड पर्सनल इक्विपमेंट. यूजिंग योर डे टू डे मोबाइल, आपको अगर आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एंड यू डोंट हैव टू पे अ डाइम फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. आपको कुछ और पैसे खर्च नहीं करने पड़ते उस इन्फॉर्मेशन के लिए, अनलेस एंड अनटिल दैट इन्फॉर्मेशन इज क्लासिफाइड. वहां तो फिर आपको देने पड़ेंगे पैसे अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हो तो. Then there are certain techniques that you can go in for. Search engines को आप यूज कर सकते हो. So many number of search engines are there. You can use social media, Twitter, Facebook, LinkedIn, जहाँ पे आपको information मिल सकती है. You can use public records, again news sources आप use कर सकते हो. This one topic which is web scraping, you can use specific tools. We'll see a look at the respective examples of this particular part, जहाँ पे आप specific tool use कर सकते हो और आप एक वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर सकते हो. It's just like होता था ना, हम किसी बर्तन से वो कुछ काला लग गया तो एक वो लेके हम उसको स्क्रैप करते थे और वो चीज़ उतार लेते थे. ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आप टूल से वो इन्फॉर्मेशन उतार लेते हो अपने पास फिजिकली. सो एनालिस्ट्स यूज दीज वेब स्क्रैपिंग टूल्स टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन within no time and efficiently also. Then there are certain data analysis tools. Whatever you have scrapped, whatever you have gathered, you can put that information, collected information, to these set of available data analysis tools, which will give you more detailed, refined insight with regards to what all information you have gathered. So Excel, Tableau, R, ये कुछ tools हैं जो बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं और बहुत अच्छा एनालिसिस करके आपको देते हैं. ये आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके बता देंगे, या आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके बता देंगे, ये बता देंगे कि रिलेशनशिप का आपस में डेटा कैसे रिलेटेड है,
कैसे मैप करना है डेटा एक दूसरे के साथ. सो यू जस्ट हैव टू फीड द इंफॉर्मेशन. Rest everything would be arranged by these all tools. Then, for organizations, it can be supporting criminal investigations by providing background profiles on people and business. It supports human resource source assessments. पुराना आज की डेट में आप good example of OS intelligence would be like if you get a job in a good reputed foreign company, तो आपके जाने के बगैर वो आपका पूरा इन्वेस्टिगेटिव बैकग्राउंड चेक करते हैं. लाइक आप कौन से स्कूल में पढ़े थे, आप कहाँ कहाँ कौन से कॉलेज में पढ़े थे, कहाँ कहाँ आप रह के आए हो. सो दिस इज व्हाट इज ऑल ओएस इंटेलिजेंस विच इज बीइंग गैदर्ड. सो ये कैसे मददगार है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज आपके जो ह्यूमन सोर्स असेसमेंट्स हैं उनको करने में, उनको अचीव करने में ये हेल्प करती है, और आपके सिक्योरिटी और रिस्क असेसमेंट्स को भी अचीव करने में ये हेल्प करती है, जो आप रिलेट कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग, सोशल इंजीनियरिंग के साथ. देन ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग तो है ही है. जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपको मिलेगा उसी हिसाब से आप डिसीजन लोगे. सो अल्टीमेटली इट इज हेल्पिंग यू टू रीच अ पर्टिकुलर कंक्लूजन once you've gathered the information. Then assist with making associations between entities, so you can establish relationship with the information that you've gathered to understand it in a more clearer or more definite way, so as to get more from that outcome जो आपको information ला करके देगी. So provide situational awareness such as getting insight into the current events. So obviously आप informed हो, because आप informed हो इसीलिए आप बचे हुए हो. आज की डेट में ये बोला जाता है बिकॉज यू आर इन्फॉर्म्ड दैट्स व्हाई यू आर सेफ. बिकॉज इफ यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, something new would be there that is going to cause harm to you in relation to using of social media and social engineering platforms. So you have to be well versed with what all is happening around you, and OSINT आपकी वहां पे फिर बहुत हेल्प करता है. So ये एक लाइव OSINT फ्रेमवर्क है जी. दिस इज अ वेबसाइट. मुझे लगा कि आपको एक टेक्निकल व्यू देना चाहिए इसका. सो ये OSINT फ्रेमवर्क है. आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे जो फ्रेमवर्क के साथ कितनी सारी चीजें हैं जो आप फिगर आउट कर सकते हो. ये वेबसाइट जो है आपको ना सिर्फ इतनी सारी चीजें बताती है, रादर ये वेबसाइट आपको डीप डाउन आगे भी लेके जाती है कि आप डोमेन नेम ढूंढने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हो, और उन तरीकों को यूज करने के कॉरस्पॉन्डिंग आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो. सो दिट्स अ वेरी गुड वेबसाइट that you can use to figure out anything with regards to open source intelligence. So right side पे आप जो देख रहे हो list of information that is available on this OSINT framework is huge, and ये जो information है इसके तरीके और tools आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको use करके आप information gather कर सकते हो. So that's a very good website. People who want to start learning OSINT can use this website to discover more in relation to what all is there in the OSINT framework. So ये है जी कुछ केस स्टडीज जहां पे OSINT की कार्यकुशलता की हम लोग बात करेंगे. मॉडर्न वॉरफेयर, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, रशियन यूक्रेन वॉर. ये आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन 21 जनवरी 2023, वेयर द वॉर के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, दोनों कंट्रीज कैसे लड़ाई लड़ रही हैं, कहाँ वो OSINT को यूज कर रही हैं, इसमें दर्शाया गया है. देन बालाकोट में जो इंडिया ने स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर जब हमारे ऊपर टेररिज्म अटैक हुआ था, प्लस चाइना के जो इनकर्जन्स हैं वहां पे भी OSINT यूज किया जा रहा है. दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड बाय अ रिटायर्ड जनरल HS Panang, who has given a new preview with regards to where how OSINT is helpful. और मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ NatGrid का एग्जांपल शेयर किया था जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम OSINT को यूज करके हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में. दिस इज द लेटेस्ट आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड इन 26th of April बाय दिलीप सिंह इन द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान बिजनेस लाइन मैगजीन के अंदर. सो बिगिन कैसे करें जी? यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ OS इंटेलिजेंस. आपको फेमिलराइज करना पड़ेगा अपने को विद रिगार्ड्स टू ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एंड OSINT टूल्स. तो ऑब्वियसली यू कैन रेफर दैट प्रीवियस 2 स्लाइड्स में जो मैंने आपको OSINT फ्रेमवर्क दिखाया, तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है आपके लिए. प्लस इसके साथ आपको अपने रिसर्च स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे. यू नीड टू लर्न टू हाउ टू वेरीफाई एंड verify the information that you are gathering, whether it's credible, whether it's reliable है कि नहीं है. वो आपको अपने रिसर्च स्किल एनालाइज एनहांस करने पड़ेंगे, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल.
तो कुछ टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो जी रोजमर्रा की जिंदगी में, दिस इज वन गुड टूल माल्टेगो के नाम से. दिस केम इनटू बीइंग इन 2008 and it's a very good OSINT tool. It monitors and maps out links between entities and provides a visualizable input for the user to use it. It's a very powerful one when one wants to get information pertaining to cybersecurity aspects. Especially जो नए malwares आते हैं, जो नए threats आते हैं, उनके बारे में इस टूल की नॉलेज बहुत अच्छी है. सो जो लोग साइबर सिक्योरिटी में जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट मालवेयर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मालवेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो इस टूल का जरूर इस्तेमाल करें. उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर टूल के कॉरस्पॉन्डिंग. देन एक स्पेसिफिक टूल है which is written in Python, but specific मैंने इसलिए बोला because this tool is running in Kali Linux operating system. So Kali Linux is an operating system which is used by hackers, the white hat hackers as well as black hat hackers. मतलब सही प्रवृत्ति के लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको इंफॉर्मेशन ला के देता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. देन अनदर टूल दैट यू कैन यूज इज द वे बैक मशीन. दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड. ये अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलो तो पुरानी जो हम साइंटिफिक मूवीज देखा करते थे जिसमें वो लोग बताते थे कि आप यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम. आई एम यूजिंग दिस फ्रेज ट्रैवल बैक इन टाइम, कि आप पीछे चले जाते थे, टाइम में वापस चले जाते थे और आप जाके इंफॉर्मेशन खंगाल सकते थे. तो जैसे इस वे बैक मशीन का नाम है, इसका लिंक मैंने ऊपर दिया है archive.org. एंड अगर आप जो स्क्रीन के ऊपर इस समय जो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसमें वे बैक मशीन के सामने अगर आप एक लाइन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लोर मोर देन 858 बिलियन वेब पेजेस दैट आर सेव्ड ओवर टाइम. सो इट्स नॉट ओनली कि जो अभी एग्जिस्टिंग नेट के ऊपर है, जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट पे था और वो अब इंटरनेट से खत्म हो गया या अब इंटरनेट पे नहीं है, वो भी आप इसमें जाके ढूंढ सकते हो. सो होता था ना कि हम जर्नलिस्ट लोग क्या करते थे कि जो न्यूज़पेपर है उसकी एक लाइब्रेरी में चले जाते थे और वो जाके बोलते थे यार 1978 का पेपर देखना, उसमें ये खबर छपी थी, कोई कोर्ट की रूलिंग आई थी, वो मुझे देखनी है. तो लाइब्रेरियन कहता था जी आप इस जगह पे जाओ, ये रिपोजिटरी है, यहाँ पे जाके आप देख लो, हमारे न्यूज़पेपर्स का एक पूरा जर्नल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ये वही चीज़ है. You can go back in time, you can search for the information which is not at present on the internet, and you can find that information from this Wayback Machine. It's a beautiful concept. Only thing is that कि इसको यूज करते समय आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसको एथिकली यूज करें. सो मैंने एक बोला था प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले कि मैं एक कोट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे. Please listen to this quote very carefully. OSINT is not about what you find. OSINT ये नहीं है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, but what you do with what you find. So important is कि it's not that whatever you're finding, it's not that important. But आप उससे कर क्या रहे हो, जो आपने इंफॉर्मेशन ढूंढी उस इंफॉर्मेशन का आप करते क्या हो. Now ये करते क्या हो का एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैकर्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड पीपल. बिकॉज सही प्रवृत्ति के लोग जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ढूंढी है उसको सही तरीके से यूज करेंगे, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उस इन्फॉर्मेशन को गलत प्रवृत्ति से यूज करेंगे. ये मैंने ड्रॉबैक यहाँ दिखाया नहीं है प्रेजेंटेशन में, मुझे लगा कि आप लोगों को बोल के बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आप लोगों के दिमाग में घर कर जानी चाहिए चीज कि इंफॉर्मेशन तो अथाह है, इंफॉर्मेशन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो इस्तेमाल आप उसका कर रहे हो उसकी सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी है. सो कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं जी. जो इनकम्प्लीट. सर वी हैव लास्ट कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट एंड आप ड्रॉबैक्स बता के क्या ये प्रोग्राम एंड कर सकते हैं? मैम जस्ट अनदर 2 or 3 slides are there and it will automatically be closed then. Okay. So incomplete and limited information. Open source intelligence relies on publicly available information which may be incomplete. Limited हो सकती है information. आपका context, जिस चीज के बारे में आप information ढूंढ रहे हैं शायद आप पूरी तरह से ना समझे हों, so ये भी एक चैलेंज है. दूसरा information की reliability. मैं एग्जांपल दूंगा छोटा सा. अगर विकीपीडिया से आप information ढूंढ रहे हैं तो कहा जाता है कि विकीपीडिया के ऊपर जरूरी नहीं है कि information reliable हो, तो आपको information के लिए other sources को भी खंगालना पड़ेगा. सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो एथिक्स वही चीज, क्या कर रहे हैं आप इंफॉर्मेशन के साथ, क्या ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म जैसी अच्छी टर्म्स को आप अपना रहे हैं, या मिसट्रस्ट, डिसक्रेडिबिलिटी या अनप्रोफेशनलिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं.
एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में। आपका आचार ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, ये खाने वाले अचार की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। वो बिहेवियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग। सो मेरी लास्ट स्लाइड जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओएसएंट मिसयूज इन रियल वर्ल्ड। 1997 में एक जेम्स बॉन्ड मूवी आई थी टुमारो नेवर डाइज, जिसमें दिखाया गया था कि ओएस इंट का मिसयूज कैसे किया जाता है। इस मूवी में जो विलन है वो एक न्यूज टाइकून होता है, बहुत बड़ा एक न्यूज एजेंसी चलाने वाला एक सीईओ होता है, जो अपनी न्यूज एजेंसी के माध्यम से दो कंट्रीज को लड़ाई के द्वार पे ले आता है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन वो प्रोपोगेट करता है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती। इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से ओएसएन का मिसयूज हो सकता है। एंड विद दैट आई वुड कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइबर सिक्योरिटी स्लोगन जो हम लेके चलते हैं जी। मैंने बोला था तो आज क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो साइबर सिक्योरिटी स्लोगन है दैट इज फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल को हमेशा रखे लॉक, ताकि सोशल मीडिया पर बनी रहे हमेशा आपकी साख। सो ये बहुत जरूरी है जी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू ऑल the viewers who had joined, and thank you from the core of my heart for being so patient listeners. Due thanks is due to the anchor who was a really good person who cooperated with me in conducting this seminar. Thank you to you too, sir, from our end. And before wrapping up, I have a query to ask you, because we have received a lot of questions from our audience's side. So one of the questions is from Sadhana Singh, and she's asking, how do we come to know that someone is stalking us on social media, and if we do, what can we do about it? मैम देखिए, आई विल टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल, बिकॉज फेसबुक पे अलर्ट्स आ जाते हैं। इफ समबडी इज लुकिंग आफ्टर योर प्रोफाइल, प्रोबेबली इन योर मेल अकाउंट और समवेयर, यू गेट एन अलर्ट दैट दिस पर्सन इज व्यूइंग योर account. Now if you find that person is not known to you, you can always complain to the Akash sir has shared you the information with regards to National Cyber Crime Portal. कल के सेशन में उन्होंने बताया था, वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, और you can contact the Facebook people and lodge a complaint that this person is stalking me without my knowledge and without my information. He's trying to gather information with regards to my all social media accounts. So that could be a preventive measure that you can take. Sure. Thank you, sir. I think our viewer, she is going to take these measures if in case she realizes that someone is stalking or even anyone else. So thank you so much for being a part of our session today, and the information you gave was really helpful, useful and informative. This is not, I'm not saying this, we have received compliments for you and your presentation regarding this. Thank you. Thank you so much. मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया और ये मैसेज सब तक पहुंचा पाया। थैंक यू ऑल। Thank you to all the viewers as well for being a part of this program. I really hope that you have registered yourself, and if you have not, please follow these steps and register yourself and participate in this program. Let me just show you that how you can operate the website. All you have to do is open CIET on any one of your browsers. So this is the home page you will see, and you can see the menu bar. In the activities section, just click on it. The last option is workshop/training. Once you click on it, scroll it a little further, and you can see in the current activity our online training's name has been written, social media and cyber security. Please click on it. Once you do, another page will open, and this is each and every information regarding this online training. Why are we doing this? The entire schedule for these 5 days, and who all can participate? What is the main objective of this training, with the experts, resource persons, names and designations written as well. If you scroll it here, reach here, and you can see this QR code. Scan it and register yourself, or click on this link and register yourself. Please make sure that you're putting right spellings of your names and other details so that they can be written correctly in your certificate. Here, if you scroll it down, this is the space for the quiz, and here the quiz link will be uploaded on the last day, that is 3rd of November, and you will get a lot of time to be a part of this quiz. All you have to do is watch all the 5 sessions that we do in this training. For that,
that, you have to click on this link. That is the link of our YouTube channel NCERT Official. Whatever sessions have been done in this program so far, they are already uploaded here. So once all the 5 sessions are finished, you can watch all the 5 sessions together in one go with the help of this link. Once you scroll it down a little further, this is another QR code for feedback. Please scan it and send your advices, suggestions, feedback, whatever you have in your mind, and we would love to take your suggestions. And lastly, this is the specific email ID, which is training.helpdesk@ciet.nic.in. Let me show you. Here is the email ID. So we'll be expecting your questions, your queries, not just during this 1 hour or this entire 5-hour 5-day, but rather all throughout the program. Thank you so much once again for being with us today. It was wonderful having you, but stay here, and the next program that we have is equally special. That is called Sahyog, Guidance for Mental Well-being of the Children. And the title of discussion is going to be Significance of Vocational Skills for Socio Emotional Well-being. Tomorrow we are going to come back here once again sharp at 4 o'clock at this same channel, that is NCERT Official, and the topic of discussion is going to be social network security. So please watch the program and it's going to be beneficial for you, guaranteed. Thank you so much. Have a great day ahead. I'm Tanvi Khurana. I'll take a leave of you. Namaskar.